Uh, so today we are going to begin crime essays, and these are crime essays from the Ideas book, and we'll be, ideas for essays. Okay, so we'll be doing these essays, and this is a compilation from both the academic and the GT books. All the essays related to crime are there, and the ideas. So many students tell me that when they start writing, they cannot generate ideas. This is an excellent book for them. Actual book is in 14 font, which is quite a big font. So it's not difficult to read, and it's also like the pages flip over very, very conveniently and easily. And this is an excellent must-have book for you all who are preparing, because this is killing two birds with one stone. You need ideas for the follow-up questions of speaking also, and you need ideas for the essays also. So when you go through this book, you are in fact preparing two modules. All right. So the very first essay here in front of us is, if children behave badly, their parents should take responsibility and also be punished. Do you agree or disagree? Now, I know that there are many first dayers in the class. May I know, and will you raise your hands? How many of you are first dayers, day one? All right. So, all right, there are around 4, 5, day one. So I would like to very briefly tell you that while I'll be touching, this class will be meant for the first years. Don't worry at all. We are doing ideas for the essays of IELTS, and while doing this, I'll also tell you what type of essays are seen in the IELTS. So the very first essay here is agree or disagree. Agree or disagree, whenever this statement, after a statement, whenever this is written, this means they're asking for your opinion. So this is a type of opinion essay. And total 3 types of essays are seen in the IELTS. Okay. I'll just open my video and for a minute or so. All right. So you can see that total 3 types of essays are seen. Okay. Opinion, discuss, and problem solution. Now, opinion essay can be asked in 3 ways. If we talk about the opinion essay, it can be asked in 3 ways. Okay. Just one second. It can be asked in 3 ways. First way is, do you agree or disagree? Second is this a positive or a negative development? And the third is, do you think the advantages or are more than the disadvantages? So, all these 3 types are the opinion essays. Handling is the same. And the second type of essay is the discuss essay. And the third type of essay is the problem solution essay. So that is enough for a beginning. And now we'll go on to discuss the ideas. And if you want more in-depth, knowledge of the types of essays and how to handle them, please refer to the 20th March class. By date, it is there on the app. And I hope you all have the link to the app when I send you a message on the very first day that contains that link, and that is Makkar English. Makkar IELTS is not my app. Makkar English is my app. And from there, you can, for the Android and for the iPhone, or Mac OS, everyone has that. There are both the links are there. So please download the app and attend the 20th March class. Okay. Okay. So, this is, these are the crime essays. The very first essay is an opinion essay. And the second essay, if a 5-year-old commits a crime, any kind, should his or her parents accept responsibility, and how should they be punished? What is the age of a child when parents no longer have the responsibility of a child's behavior? So these are the 2 essays. This first essay is an opinion essay. The second essay is a direct question essay. But you can see very well that the ideas will be more or less the same in both the essays. Okay. So the first essay says कि अगर बच्चे badly behave करें, तो क्या पेरेंट्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एंड उनको ही पनिश करना चाहिए? पेरेंट्स को उनको भी ऑल्सो बी पनिश, उनको भी पनिश करना चाहिए। दूसरा है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर बच्चे बैड बिहेव करें तो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और पनिशमेंट भी उनको देनी चाहिए। क्या आप इससे सहमत है या नहीं सहमत? डिपेंड्स अपॉन द अपब्रिंग। मैम ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ should be it's upon to
Pardon? known and very responsible for children actions. I don't agree that Um, emotions should be Pawan, punished and other. Pawan, let me complete the topic. Then if you have any question after that, come to it. Okay, I'm coming to this. Okay, I hope it is clear to you. Okay, let me first complete the topic. You are confusing everyone. Okay, so this is, I told you how to handle it yet? I'm coming to it. Okay, I'm just explaining the topic. So the first essay says, if children behave badly, पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और पनिश भी करना चाहिए. क्या आप इससे सहमत है कि नहीं? You can go one-sided and you can say yes, parents should take responsibility and they should be punished. You can say no, parents should not take responsibility, they should not be punished. That should be strongly agree or strongly disagree. But you can see that this essay has two parts. First part says कि parents को responsibility लेनी चाहिए और दूसरा part कहता है उनको punishment भी मिलनी चाहिए. So you can give a concession here. You can say कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए पर आप डिसएग्री करो, इसके साथ आप एग्री करो और इसके साथ डिसएग्री करो कि उनको पनिश करना चाहिए. पनिश तो बच्चों को ही, पनिशमेंट तो बच्चों को ही मिलनी चाहिए. सो इज दैट क्लियर? यू कैन गो, you can give a concession and go midway. You can have an opinion which is you can agree with the first half of the statement and disagree with the second half of the statement, or disagree with the first half and agree with the second half, because this one statement is having two halves which are saying two different things. Is that clear? Let me know if that is clear. Okay, give me some yes. Yes, ma'am. All right. So the second essay says that if a 5-year-old commits a crime, 5 साल का बच्चा, तो क्या उसके पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उन पेरेंट्स को कैसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए? और देन द सेकेंड क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. वो पूछ रहा है कि क्या एज होनी चाहिए बच्चे की जब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाए और बच्चे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे. So they are asking you a direct question. And this second essay is from the general book and this first essay is from the academic book. So you can see similar essays are there ideas wise, but the way of asking is different and if you know how to handle. So इस essay में, the second essay की intro में, you have to tell the examiner that you will be answering both these questions. Okay, you can say if a 5-year-old commits a crime, then parents should accept responsibility. And how should they be punished? And in this essay, I'll discuss how the parents should be punished. And then I believe the age of 18 is, when the parents, till the age of 18, the parents should be held responsible for a child's behavior. But after that, it should be the parents' responsibility should not be there because there are many other factors, okay, which affect the behavior of children after that age. Or you can say teenage, जब teenage में enter करते हैं उसके बाद parents की responsibility नहीं होनी चाहिए. So you can see how to handle it. Let us go to the ideas and you will say, while I certainly agree that parents are responsible for their children's actions, I do not agree that they should be punished. तो पहले ऐसे की thesis statement ये लिखी है मैंने. You can see while statement is very easy. While I certainly agree that parents are responsible for their children's actions, I do not agree that they should be punished. Is that clear? Why parents should be held responsible? Ab responsibility क्यों है parents की? First, children's behavior to a large extent is dependent upon their upbringing, which in turn depends upon their parents. Young children imitate their parents and later on these behaviors become their habits. So, if parents are abusive and disrespectful, their children are also likely to behave in such a way. Second, it is the onus of the parents to keep an eye on them so that they do not exceed their limits and commit grave crimes. तो बच्चों की responsibility parents की होती है. Parents responsible है for their upbringing और parents जैसे करते हैं बच्चे वही चीज imitate करते हैं inadvertently. Inadvertently word होता है, which means without even realizing what they are doing, they just copy their parents inadvertently. Would you like to learn this word? Inadvertently. यहाँ मैंने लिखा नहीं word. The children inadvertently, without even realizing, without even purposefully, doing it inadvertently.
You know, sometimes normally I don't go after vocabulary, but in case anybody wants to write, so you can use this word in, had, were, T and T, inadvertently. Okay, unintentionally. Intentionally होता ना जानबूझ के, unintentionally. Okay, so children inadvertently copy their, without intention, just by looking, they just copy their parents, and so parents should be held responsible. Are the points clear to you, both these points? Let me know if they are not. I'll explain again. Not an issue at all. Okay, why parents should not be punished? Okay, so in the first essay I'd written, now the parents should not be punished. First is, although children's behavior depends upon their upbringing, it is certainly not the only factor. In fact, children's behavior also depends on external influences like media and peer pressure. तो कितने बच्चे हैं जो टीवी पे कोई प्रोग्राम देख के किसी को शूट कराते हैं या किसी से झगड़ा कर लेते हैं, एंड पीयर प्रेशर इस दोस्तों के बहकावे में आके कुछ गलत कर जाते हैं. सो पेरेंट्स शुड नॉट बी पनिश, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स का ही रोल नहीं होता, और भी बड़े फैक्टर्स हैं जो बच्चे का बिहेवियर पे इफेक्ट लाते हैं. ठीक है. Punishing parents would mean children stop taking responsibility for their actions. They would go into adulthood never having taken accountability for their actions. In adult life also, they would try to blame others for their actions. So, दूसरा point है कि parents को अगर punish करोगे तो इसका मतलब बच्चे, the children will start thinking that they are not responsible for their actions. Okay? और वो adulthood में चले जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और कभी अपनी किसी भी action की accountability लिए बिना, in adult life also, they would try to blame others for their actions. And third, although parents are responsible for teaching moral values to their children, children still commit crimes, even if they are taught what is that it is wrong. For example, many children are caught shoplifting, even if their parents have taught them that stealing is wrong. This has nothing to do with parents, but only the child committing the offense. Punishing parents would also remove the feeling of guilt among children, and they are more likely to commit crimes because they would think that they can get away with it. So all these points are clear. Now, having these points in mind, do you think you can frame a good essay if you have the ideas with you? Anything which is not clear, do let me know. Ma'am, shoplifting and getaway, what is the meaning of Shoplifting these means, two? शॉपलिफ्टिंग मीन्स जैसे कोई बच्चा मदर के साथ जाता है किसी दुकान पे, वहां से कुछ उठा के जेब में डाल देता है. मदर ने कभी नहीं उसको सिखाया कि ऐसे करो. ओके, बट बच्चा करता है अपने आप ही, क्योंकि बच्चे में कुछ, चाइल्ड हैज दिस हैबिट. एंड गेट अवे मीन्स बच जाते हैं उसको करके. ओके, ओनस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, ओनस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. When should parents have no responsibility for their children's actions? ये दूसरे ऐसे में क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसका मैंने उस ऐसे में जवाब दिया है कि I think that children should be fully responsible for their actions once they turn 18. Once they turn 18, तो बच्चे ही fully responsible है, parents का कोई रोल नहीं. Okay, so these are two essays and the ideas are there together. So just see that it's very easy. Once you have the ideas, you can frame any koi or kisi way mein bhi essay aaye, you can now write with these ideas. Now this is the next essay. This is, in recent years, the number of crimes committed by teenagers in major cities throughout the world is increasing. Give reasons and suggest some solutions. So I told you, the first two essays that we have done today, first essay was an opinion essay, agree, disagree. The second essay was a direct question essay. Direct question essay को मैं problem solution essay की category में डाल देती हूँ. And this essay in front of you is a problem solution essay. In any problem solution essay, what is asked is causes, ये चीज हो रही है, इसके क्या कारण है. दूसरा इफेक्ट्स, दैट मीन्स ये चीज हो रही है, इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स, इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं. एंड थर्ड थिंग इज सॉल्यूशंस. अब इन तीनों में से causes, effects and solutions, generally two of these three things are asked.
So it can be causes and effects, it can be causes and solutions, it can be effects and solutions. Is that much clear? Please let me Yes, know ma'am. if it's not clear. Yes, ma'am. I can explain it again. Okay. Now, in any problem solution essay or direct question essay, how to handle the essay? एक लाइन में, हिंदी में, इंट्रो में एग्जामिनर को बताओ क्या बताना है, बॉडी ऑफ द essay में उसको बता दो, और कंक्लूजन में बता दो कि आप बता चुके हो. Okay, that is it. Introduction, tell him what you have to tell him. Body of the essay, tell him. Conclusion, tell him what you told him. Clear? All right. So, in recent years, the number of crimes committed by teenagers in major cities throughout the world. Ab crimes committed by teenagers. बच्चे हैं teenagers. They are not yet adults. 13, 14, 15. जिसके पीछे teen लगता है वो teenagers है. पर adult में कि 1-2 साल भी आ जाते हैं, 18 और 19 भी आ जाते हैं, doesn't matter. तो ये जो crimes है, जो young age में बच्चे करते हैं, इनको कहते हैं, इन बच्चों को कहते हैं, इस तरह की क्राइम को कहते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी. दैट मींस बाल अपराध. इन हिंदी वी से बाल अपराध, इन इंग्लिश वी से जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी. स्पेलिंग्स अच्छे से कर लेना. ये वर्ड आपके टॉपिक में नहीं होगा, पर आपको डालना है अपने टॉपिक में. JUVENILE, जुवेनाइल. डेलिक्वेंसी नहीं होता बच्चे, डेलिक्वेंसी बोलते हैं, फिर ये एन भी नहीं डालते. इट इज डेलिक्वेंसी. स्पेलिंग्स देख रहे हो आप सब? प्लीज अच्छे से कर लेना स्पेलिंग्स, नहीं तो गलत हो जाएंगे. ओके, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी. अब इसके कारण क्या है? फर्स्ट रीजन इज मीडिया में वायलेंस एंड क्राइम्स दिखाई जाती है. सेकंड इज द चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फैमिलीज इंस्टेड ऑफ जॉइंट फैमिलीज. Nuclear families may nobody to take care, watch what children are doing, what is their company, what they are watching. Third is increasing poverty, unemployment, and competition. This is causing hopelessness and frustration among the youth. And they want quick money, and parents can't give them, so they resort to crime. And fourth is the consumerist society. Consumerist society means they are seeing so many things around them. They want to buy them. They want them by hook or by crook. Okay, parents can't afford, so they resort to crime. They resort to chain snatching, pickpocketing, and other such petty crime. Petty, PETTY, small, chota crime. Okay, which turns into major crime very soon. So these are the reasons for increasing juvenile delinquency. Solutions for reducing youth crime. What are the solutions? Are the points clear? First tell me. Are these 4 points clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Solutions. Censorship क्या होती है? You all know censor board ने ये सीन काट दिया, सुना है ना ये? Censorship. Yes, ma'am. Censorship of TV channels is needed. Parents should ration the TV viewing hours of children. राशन कार्ड पे क्या मिलता है आपको पता है? राशन कार्ड सुना हुआ है? आजकल तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा. राशन कार्ड पे सस्ती चीजें मिलती हैं, पर लिमिटेड मिलती हैं. राशन कार्ड पे आप महीने की कितनी चीनी, कितना आटा, ये सब लिमिट होती है. ऐसे ही पेरेंट्स को टीवी देखने का टाइम राशन करना चाहिए, मींस लिमिट करना चाहिए. ओके, पेरेंट्स शुड वॉच टीवी विद चिल्ड्रन so that they know what their children are being exposed to. Encourage joint families so grandparents can keep an eye on children while parents are out working. Parents should be good role models. A good family atmosphere should be provided to children. Friend circle of the children should be monitored. Parents should educate children about the harms of consumerism. Schools should also provide good education and moral values to children. Children should be encouraged to do sports and other extracurricular activities after school. It occupies their time and keeps them away from delinquent behavior. Government should try and reduce unemployment and poverty, which are the root causes. So, solutions clear, causes clear. Should I move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
All right. So this essay is young people who commit serious crimes should be punished in the same way as adults. Do you agree or disagree? तो जो यंग बच्चे हैं जो सीरियस क्राइम करते हैं, मतलब जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, बट सीरियस, नॉट पेटी क्राइम बट सीरियस क्राइम, फेलनी, ओके, फेलनी करते हैं, सीरियस क्राइम को कहते हैं फेलनी, उनको बिल्कुल वैसे ही पनिश करना चाहिए जैसे कि एडल्ट्स को किया जाता है. डू यू एग्री और डिसएग्री? मैंने इसको स्ट्रांगली डिसएग्री करके ऐसे बनाया है. एंड द सेकंड essay is a recent newspaper article reported that a 14-year-old boy who seriously destroyed his school got the punishment to clean the streets instead of being sent to prison. तो 14 साल के बच्चे को क्या पनिशमेंट दी उन्होंने? कम्युनिटी सर्विस, मतलब सड़कें साफ करवाई, उसको जेल में नहीं भेजा. डू यू थिंक दिस इज राइट? नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन. अब आप अगर आप लिखोगे आई बिलीव इट इज द राइट अप्रोच, और डू यू थिंक सच क्रिमिनल्स शुड बी सेंट टू प्रिजन, तो आप इसको राइट अप्रोच लिखो. और फिर आप लिखो कि कम्युनिटी सर्विस के क्या फायदे हैं यंग बच्चों को देने के, और ये भी लिखो कि प्रिजन में नहीं भेजने के क्या फायदे हैं, या प्रिजन में भेजने के क्या नुकसान हो सकते हैं. तो एक ही बात है ना. तो उस वे में आपका ऐसे बनेगा. और ये फर्स्ट ऐसे है कि जो यंग पीपल सीरियस क्राइम करे उनको सेम वे पनिश करो जैसे एडल्ट्स को. तो एडल्ट्स को तो प्रिजन में भेजते हैं, इनको नहीं भेजना चाहिए. इनको डेलिंक्वेंट उनके होते हैं, यू नो, रिफॉर्मेटरी स्कूल्स होते हैं जो यंग पीपल होते हैं, वहां भेजना चाहिए, नॉट इन प्रिजन्स. तो इसमें भी वही आइडियाज आएंगे प्रिजन्स के अगेंस्ट जो इस ऐसे में आएंगे. सो आइडियाज आर हैव बीन पुट अप टुगेदर, and then you can, you know, do write accordingly in your essay. So why juvenile delinquents should not be punished as adults? So first point is that although adolescents are old enough to understand the difference between right and wrong, they are too young to make the right choices yet. They are less likely to think before they act or pause to consider the potential consequences of their actions. तो जो यंग पीपल होते हैं ना, उनको पता है ये गलत है, पर उनको ना दूर तक उनकी नजर नहीं जाती है देखने में कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इसका क्या नुकसान हो सकता है. So they don't know that. That is why they should not be punished as adults. They act on impulse. Okay? They don't think about the long-term consequences. If tried in an adult court, अब ये tried word है. If tried in an adult court, can you tell me the meaning of tried? Anybody? Tell me the meaning of tried. मैम पेशी. हाँ, ये वहां ये ट्रायल होती है ना कोर्ट में, तो ये ट्रायल से ट्राइड है. वैसे ट्राई होती है कोशिश करना, पर ये है पेशी करनी उनकी, वहां सुनवाई करनी, ट्रायल करनी कोर्ट में. सो इफ ट्राइड इन एन एडल्ट कोर्ट दे मे इवन बी सेंट टू प्रिजन. तो अगर एडल्ट कोर्ट में ट्राई करेंगे तो उनको प्रिजन में भेजा जाएगा. नहीं, ट्राइड सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्राई नहीं है, ट्राइड वो डिफरेंट ट्राई है. So if tried in an adult court, they may even be sent to prison. Juveniles tried and prosecuted in adult courts get influenced by adult prisoners and are more likely to re-offend. तो अगर उनको प्रिजन में भेजोगे तो प्रिजन में क्या होएगा, ये छोटे छोटे बच्चे गलती कर गए, इनको प्रिजन में भेज दिया, वहां पे क्राइम के PhDs बैठे हैं ना. So prisons will act as universities of crime. Okay, so prisons will act as universities or schools of crime, and they will learn even more crime अगर उनको crime भेज दिया. By contrast, juvenile detention facilities have programs to reform them and give them a chance for redemption. तो contrast में जो juvenile detention facilities है, उनमें programs होते हैं उनको reform करने के and give them a chance for redemption. This is a critical age in the development of an individual. Sending children to prisons may affect their education and seal their fate in terms of rehabilitation back into society. अगर उस उम्र में यंग बच्चों को प्रिजन में भेज दिया तो पढ़ने लिखने की उम्र है, वो प्रिजन में निकल जाएगी, पढ़ने लिखने का समय निकल जाएगा, तो उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी. ओके, इट मे सील देयर फेट. सील होता है मतलब बंद, सील कर देना, मतलब उनकी फेट सील हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन होता है मतलब रिहैबिलिटेट करना होता है उनको वापस अपने पैरों पे खड़ा करना. वो कभी नहीं हो पाएगा फिर.
adult criminals have the necessary skills to get employment after leaving prisons, but for young people, it might be impossible because of their lack of education. And the next point is, children are not permitted the same rights and responsibilities as adults. जैसे बच्चे हैं उनको voting right नहीं है, drinking right नहीं है, smoking right नहीं है, because society recognizes their inability to make adult decisions. So the difference in terms of criminal law is also justified. तो ये है ये जो मतलब है मेरा स्ट्रांगली डिसएग्री करके इससे बनेगा, और इसमें मैंने बोलना है कि ये राइट है, और फिर राइट कह के कम्युनिटी सर्विस राइट है, छोटे बच्चों को जुवेनाइल डेलिंक्वेंट को ये देना राइट है, और प्रिजन में भेजना रॉन्ग है, क्योंकि प्रिजन में भेजने के ये नुकसान हो सकते हैं। समझ आ गए कैसे आइडियाज वही वाले यूज करोगे दोनों एसेज में? Say either a yes or a no so that I can explain, or I can go further, move on to the next essay. मैम जुवेनाइल डिटेंशन का क्या मतलब है? जुवेनाइल डिटेंशन एंड रिडेम्पशन सेकंड पॉइंट। हाँ, जुवेनाइल सेकंड पॉइंट है। जुवेनाइल जो है ना, उनके डिटेंशन होम्स होते हैं जहाँ जुवेनाइल्स जो कोई क्राइम करते हैं उनको वहां भेजते हैं, ना कि आम प्रिजन में। वहां पे इनको पढ़ाने लिखाने का इंतजाम होता है। ओके, इनको रिफॉर्म करने का इंतजाम होता है। इनको आम प्रिजनर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जुवेनाइल्स को। दे आर टॉट, एजुकेटेड ओवर देयर। ओके, दोज आर जुवेनाइल डिटेंशन होम्स। ठीक है, दैट इज इट। चांस फॉर रिडेम्पशन इज, रिडेम्पशन होता है जैसे अपने आप को सुधारना, अपने आप को। redemption means that, okay? Redemption. The act of saving or state of being saved from the power of evil. तो redemption की possibility है ना, act of, तो ये redemption है, okay? To be saved or improved, तो वहां उनको improve करने का chance मिल जाता है। Okay, past redemption, beyond redemption is कि जिसको redeem, जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता। Okay, ये redemption का यहाँ पे ये मतलब है। Alright. Next is, there are 1, 2, 3, 4, 5 essays, and 5 essays ideas are very similar here. And first is, studies show that many criminals have a low level of education. For this reason, people believe that the best way to reduce crime is to educate people in prison so that they can get a job when they leave prison. Do you agree or disagree? अब ये essay ना, this essay has the word the best way. आपको मैं ये बात समझाना चाहती हूँ कि ये जो वर्ड है ना, द बेस्ट वे, ये कैटेगोरिकल होते हैं वर्ड्स। द ओनली वे, द बेस्ट वे, द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, इनके इन एसेस के साथ ना इट्स वेरी वेरी इजी टू डिसएग्री। आप कह सकते हो कि एजुकेट करना प्रिजन में लोगों को एक अच्छा तरीका है, इट्स ए गुड वे, बट नॉट द बेस्ट। अदर थिंग्स आर बेटर टू रिड्यूस क्राइम। अब ये कह रहे हैं कि रिड्यूस क्राइम करने का, क्राइम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रिजन में जो प्रिजनर्स हैं, जो इनमेट्स हैं, इनमेट कहते हैं जो कैदी होते हैं, उनको एजुकेट किया जाए, वो बेस्ट वे है, फिर क्राइम कम हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली मैंने इसके साथ डिसएग्री करा कि बेस्ट वे नहीं है, और मैंने बोला है कि ये अच्छा तरीका है, चलो उनको पढ़ा लो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी वन रीजन है ऑफ क्राइम। तो बाहर आके दोबारा वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, बिकॉज उनको अंदर एजुकेट कर दिया है, ओके, और अपने पैरों पे खड़ा होने लायक कर दिया है। तो you know, when they leave prison, they get a job. It's a good way. But crime को reduce करने का best way और है, and सबसे अच्छा way है कि crime को होने से पहले ही रोको। अब prison में teach करने का मतलब है कि एक बार तो वो crime करके prison में पहुंचे हुए हैं ना, समझ गए? ये बेस्ट वे नहीं है रिड्यूस करने का क्राइम, बिकॉज हम क्रिमिनल जो इनमेट्स है उनको टैकल कर रहे हैं। तो ये रिपीट क्राइम रोकने का बेस्ट वे हो सकता है, बट फर्स्ट टाइम क्राइम करने वाले भी बहुत हैं, उसको रोकना बेस्ट वे है। ठीक है,
And second essay है, prison is a common way in most countries to solve the problem of crime. However, a more effective solution is to provide people a better education. Do you agree or disagree? अब prison जो है बहुत सी countries में क्राइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉमन वे है, बट ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन है उनको एजुकेशन दो. ओके, अब ये कह रहे हैं कि वही पहले वाला ऐसे भी सिमिलर है. इसमें कह रहे हैं आपने एग्री डिसएग्री करना है, क्योंकि ये ऐसे कह रहा है कि प्रिजन इज नॉट ए गुड वे जो क्राइम को सॉल्व करने का. मोर इफेक्टिव है कि बेटर एजुकेशन दो, उससे क्राइम कम होगा. सो यू कैन एग्री हियर. Next essay is, certain people believe that the only way to reduce crime is by sentencing criminals for longer time periods. तो ये कह रहे हैं कि एकमात्र तरीका, the only way क्राइम को कम करने का है कि लंबे टाइम के लिए प्रिजनर्स लोगों इनको जेल में भेज दो. और दूसरे लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं ओनली वे ये है, दूसरे कहते हैं alternative methods should be used to lower crimes. Alternative means उसका alternative, prison का alternative, जैसे community service कराओ या और ऐसे कुछ कराओ ताकि वो crime जो है वो कम होए. डिस्कस करने हैं both views और अपना opinion देना है. Next essay is, research suggests that, research बताती है that majority of criminals, ज्यादातर जो क्रिमिनल्स है जिनको जेल में भेजा गया वो कमिट क्राइम करेंगे जब उनको छोड़ा जाएगा. ऐसा क्यों है? व्हाई इज दिस द केस? व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम? और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? ओके, रिपीट क्राइम रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? एंड द फिफ्थ एसे इन दिस सीरीज इज, the proper function of prisons is to punish criminals and life in prisons should be hard. Do you agree or disagree? तो ये कह रहे हैं कि proper function prisons का criminals को punish करना है और prisons की जिंदगी hard होनी चाहिए. Are you in agreement with this or do you disagree with this? अब सारे essay के topics मैंने आपको समझा दिए हैं, और इन essays में जो first essay है उसमें आप लिख सकते हो बेस्ट वे नहीं है, गुड वे है, बेटर और बेटर वेज हैं. दूसरे हिस्से में मोर इफेक्टिव सोल्यूशन है बेटर एजुकेशन देना. आप कह सकते हो वाइल एजुकेशन इज डेफिनेटली अ मोर इफेक्टिव सोल्यूशन, प्रिजन्स आर स्टिल नीडेड फॉर हेनस क्रिमिनल्स. हेनस क्राइम, हेनस होता है दरिंदगी भरा क्राइम, जैसे मर्डर है, रेप है, तो प्रिजन्स की जरूरत फिर भी है. तो थोड़ा कंसेशन देके ना आप एग्री करो. एग्री विद ए कंसेशन. एग्री विद ए कंसेशन मींस आप कह सकते हो कि प्रिजन्स तो चाहिए ही चाहिए, बट डेफिनेटली एजुकेशन इज अ मोर इफेक्टिव सोल्यूशन. ठीक है. तीसरे हिस्से में ओनली वे के साथ आप डिसएग्री करोगे. आप बोलोगे ये डिस्कस बोथ व्यूज है, तो आप लिखोगे क्यों कुछ लोग कहते हैं सिर्फ एकमात्र तरीका है कि इनको जेल के अंदर डाल दो. वो आप लिख देना कि ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं, हेनस क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ सोसाइटी को मिक्स होना सोसाइटी के लिए खतरा हो सकता है. एंड सेकेंड आप पॉइंट लिख सकते हो कि सम ऑफ द क्रिमिनल्स आर मेंटली सिक. जैसे सीरियल किलर्स होते हैं ना, जैसे बॉम्बे में कुछ साल पहले था एक जो कोका कोला का कैन छोड़ जाता था मर्डर करके उसके पास, ऐसे ही सीरियल किलर. तो उसका एक ही पैटर्न था किल करने का, एंड किसी को भी पकड़ के मर्डर कर देता था बिकॉज ही गॉट द किक आउट ऑफ द क्राइज ऑफ पीपल व्हेन दे वर बीइंग मर्डर्ड. So these are serious, these are mentally sick, mentally insane people. Okay, insane people who do such crime. So उनको तो उनके लिए तो जेल ही है, उनको सोसाइटी में मिक्स होने देना ही नहीं चाहिए. Okay. So दूसरे लोग क्यों कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करना है, उसका एक पैरा बनेगा. So this is how you handle it, discuss इससे. And then रिपीट क्राइम जो है उसके क्या कारण है? उसके कारण वही है, एक तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, दूसरा दे डोंट नो एनी वर्क. ओके, कोई उनको जॉब नहीं देता, पहला पॉइंट. दूसरा उनको कोई वर्क नहीं आता. फिर उसके लिए आप लिख सकते हो कि इसको सॉल्व करने के लिए अंदर प्रिजन के अंदर उनको कोई वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करो, जैसे कारपेंट्री, प्लम्बिंग, प्लम्बर बनना सिखा दो, या ऐसा कुछ जो कि बाहर आके then they can earn for themselves. And लास्ट ऐसे प्रॉपर फंक्शंस. इसके साथ आप इस क्वेश्चन के भी दो हाफ्स हैं.
पहला हाफ कह रहा है कि प्रिजन का प्रॉपर फंक्शन है कि क्रिमिनल्स को पनिश करना, इसके साथ मैं डिसएग्री करती हूँ। मेरा मानना है कि सिर्फ पनिश करना ही उनका प्रिजन का प्रॉपर फंक्शन नहीं है। रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज प्रिजनर्स, वापस जब छूटे तो उनको नौकरी मिले, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, रिहैबिलिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो दूसरे हाफ के साथ लाइफ इन प्रिजन शुड बी हार्ड, उसके साथ मैं एग्री करती हूँ। फर्स्ट हाफ के साथ मैं डिसएग्री करती हूँ। So are all these 5 essays topic wise, are they clear to you? Yes, ma'am. Ma'am, What? could you please tell me the thesis of third statement? Which third essay? Yes, ma'am. This is a discuss essay. In any discuss essay, you will paraphrase. इसको paraphrase कैसे करोगे? Certain people believe. इसका लिखो, it is believed by some that the only way to decrease crime is by putting criminals for long times in prisons. Okay, ये मैंने paraphrase कर दिया, comma, while others assert that, okay, other methods should be used to curb crime, curb, CURB. तो मैंने थोड़े थोड़े वर्ड चेंज करके पैराफ्रेजिंग कर दी। उसके बाद लिखो, in this essay I will discuss both views, full stop. I personally side with the latter view. I personally side with the former view. अब आप देख लो आपने किसके साथ जाना है, फॉर्मर के लैटर। आप कहते हो ओनली वे उनको प्रिजन में भेजना है, कि आप कहते हो और मेथड्स यूज करने चाहिए, बेटर है, तो आप फॉर्मर या लैटर लिख दो। यहाँ आपका अपना व्यू मिडवे भी हो सकता है। यू कैन राइट कि जो बिल्कुल हेनस क्रिमिनल्स हैं उनको तो जेल में डालो और बाकियों को रिफॉर्म करो। ओके, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ऑल राइट। Thank you. Points in favor of prisons क्या है? Prison is the only answer in the case of criminals who are a risk to society, such as murderers. They cannot be made to mix with society. And second, prison is the only answer in the case of repeat offenders or people who commit crimes even if they are wealthy and educated. And third, people would not be afraid of doing crime if fear of imprisonment is not there. तो 3 points है जो prisons के favor में जाते हैं। एक तो prison का डर होता है, जेल चला जाएगा ना कर, ठीक है। दूसरा, ये जो repeat offenders है, जो serial killers है, वेल्दी है, एजुकेटेड है, फिर भी क्राइम करते हैं लोग, उनके लिए तो प्रिजन ही आंसर है ना, वो तो मेंटली सिक है। एंड तीसरा है कि जो रिस्क है टू सोसाइटी, उनको मिक्स ही नहीं करने देना चाहिए लोगों के साथ। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर प्रिजन्स, एंड देन वी हैव पॉइंट्स अगेंस्ट प्रिजन्स, एंड लेट्स सी व्हाट दोस पॉइंट्स आर। In traditional prisons, people learn a lot about crime. In traditional prisons, people learn a lot about crime. And so when they leave prison, they'll commit even more crime. Second, prisons are expensive to maintain. The petty and minor criminals can also be employed in some community service projects after providing education and vocational training. Third, when criminals get some education, they would be able to get jobs after leaving prisons. Thus, they would be able to fulfill their basic needs and they will not be forced to resort to crime. Fourth, education would also increase the self-confidence of convicts and would make them more open-minded and respectful. So these are points against prisons. And Ma'am, can I ask one? pardon? Please Ma'am, ask. traditional prison use हुआ? Traditional prison होती है जो आम जेल है, traditional. Okay? Traditional prisons जो आम जैसी जेल होती है, उसको ऐसे वर्ड यूज किया है। Okay? Okay, ma'am. ठीक है? So next is educating the prisoners is not the best way to curb crime. Why? Criminals commit crimes again and again, not because of lack of education, but the inability to secure good jobs. अब बाहर निकल के उनको educated है कि एक बार crime कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि education is the best way. ये best क्यों नहीं है? क्योंकि education बाहर educated करके भी उनको कोई job नहीं देता।
So it is not the best way na, rehabilitate karna hai. Unko, this is because most people avoid hiring criminals and there is a need to change society's attitude towards criminals. Government could also facilitate this change through incentives like tax rebates to companies which hire convicts. Education in prisons may stop repeat offenses, but it will not impact first-time crimes. Hence, rather than focusing on education in prisons, the government should focus on primary education so that the overall literacy in society comes down and even first-time crimes are reduced. So, ये point समझ आ गया? All right. Say yes or no. What are the other better Yes, ways? ma'am. Yes, ma'am. What are the other better ways to curb Yes, crime? ma'am. All right. What are the other better ways to curb crime? Other better ways are the best way to reduce crime would be never let it happen in the first place. Laws should be enforced strictly, so strictly that people should think 100 times before resorting to crime. And youth unemployment should be dealt with by creating job openings or by encouraging an entrepreneurship. Entrepreneurship क्या होती है? नए businesses उनको खोलने को मतलब उनके projects को approve करे government and they should become entrepreneurs जो अपना startups करते हैं. Okay, businessmen. And then there's the importance of community work. Community service such as maintaining parks and doing some construction work can be taken from criminals instead of just putting them into prisons. And this type of work makes them feel part of the community and the community also starts accepting them. And last is proper function of prisons. Prisons have three basic functions: to protect society from offenders. Prisons punish offenders by keeping them away from their families, and they rehabilitate or reform offenders. Prisons are correctional institutes where prisoners are reformed to become law-abiding citizens. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why life in prisons should be hard? Why life in prisons should be tough? Prisoners should be made to lead a very disciplined life and made to do some community work. This work could be any labor type work or any work depending on the capability of the inmates of the prison. It would act as a deterrent for prisoners to reoffend once they are set free. They would not have the time to learn crime from other serious offenders within the prison. And it could ensure that the prison labor could be turned into an industry and money could be generated for the maintenance of these prisons. Okay. So ye essays the aaj ke. We have done how many essays? 5 here, 6, 7. Then this is 8, 9 and 10. 10 essays. Okay. So I hope all of you have learned something. These are crime essays. These are combined from both academic and GT book. And yes, the ebook of this is there for sale. It is a paid file. You can pick it up from the website www.makkadiles.com. You can pick it up from there, or you can purchase the paperback edition that we have, because holding this book in hand would be more effective. Okay, you can flick over the pages, write on them, mark them. Okay, see. Now, where is the paperback edition? Is it on the website as well? I think so. It's there. Otherwise, you can message me. I'll send you the phone number where to. Okay, ma'am. It's your order. Okay. And Okay, ma'am. This is really a good book. It's really helpful. All right then. We'll see you tomorrow for the next reading class, reading 14, passage 3. And meanwhile, if you have any problem related to anything, you can put the message in the group. I would reply in the group rather than sending me personal messages. Any query or anything that you have, anything you have to ask, send me a message in the group, in your respective group. You're all part of some or the other group, right? All right. Yes, ma'am. All right. See you tomorrow. Good night, ma'am.